Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And since you people know कि आज हम लोग पेपर 2 के ऊपर बात करेंगे, पेपर 2 के ऊपर वर्किंग करेंगे. So the topic that we are going to start is called flowcharts. Flowcharts हम लोग बच्चों आज स्टार्ट भी करेंगे और मैक्सिमम जितने भी past papers हम लोग solve कर सकते हैं in today's session. So we are going to solve those past paper questions as well of flowcharts. Flowcharts के अलावा we did pseudo codes. हम लोगों ने काफी pseudo codes करे थे. We did error correction and detection techniques as well. So वो सारी recorded lectures भी मैं आप लोगों के साथ properly share भी कर दूंगा. In our next session में हम लोग प्री रिलीज को डिस्कस करेंगे एक दफा फिर वापस से, और प्री रिलीज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा in our next class. That will be on coming Sunday. So meanwhile स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करते हैं. So when we talk about the flow charts are actually pictorial representation of algorithms. So whenever we represent algorithms in pictorial form, that is called flowcharts. Now, there are different symbols that are being used to represent the flowcharts. ये आपको एक वर्किंग फ्लो बताते हैं सूडो कोड का, एक एल्गोरिथम का, कि किस तरह आपका कोड जो है बच्चों एग्जीक्यूट किया जाएगा. So we are having different symbols, starting with the first symbol. So whenever flowcharts are started, so we use an oval symbol. So oval use किया जाता है बच्चों for start as well as आपका फ्लो चार्ट भी इसी सिंबल के ऊपर एंड भी किया जाता है. Similarly, the next symbol is रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर आपके पास सारी प्रोसेसिंग्स आती हैं. सर प्रोसेसिंग से मतलब बच्चों x is equal to x multiply by 10. कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, कोई भी इस टाइप का ऑपरेशन है, तो दैट कम्स इन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स. कोई असाइनमेंट है लाइक case 1 is equal to 10. So this is also processing. After this, the third symbol is a parallelogram. So ये parallelogram बच्चों हम लोग यूज करते हैं for input and output of from the user. कोई चीज डिस्प्ले करवानी है आपने, ये बॉक्स यूज होगा. कोई चीज यूजर से इनपुट लेनी है आपने, सो ये बॉक्स यूज होगा. लाइक input age. So we are going to use this box. The fourth box is a diamond box. We call this box as decision box as well.
and this box always having two outputs. One is yes and the other one is no. For example, मैंने बताया यहाँ पे is z greater than 100 question mark. So बच्चों इस इक्वेशन का हमारे पास दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, either yes और no. So whenever this type, मतलब इस टाइप का आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो, so we go with this particular box. And I think we are done. So ये चार सिंबल ही आप लोग के मेनली यूज किए जाते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन के अंदर. Now without wasting any time, let's move forward. आगे बढ़ते हैं जरा आप यहाँ पे. And let's start solving the past paper questions of flowcharts. Okay, here you go with the first question. This is May June 2015. And the variant is 2-1. Question number 3. अब आपके एग्जामिनर ने बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दे दिया, and he is asking you people input the weight of a number of parcels in kilograms. Parcels weighing more than 25 kilograms are rejected. Value of -1 will stop the input. Fine. So if the value is exceeding -1, so we are going to stop the input. And this is the diagram. Or these are the values बच्चों जिसके ऊपर हमें क्या करना है, पूरा अपने कोड को ड्राई रन करना है. So मैं इसको अलग पेज पे ले जाता हूं ताकि पैरेलल के अंदर हम दोनों चीजें परफॉर्म करते रहें. So here you go. बच्चों दोनों डायग्राम्स आप लोग के पास क्या आ गई, पैरेलल के अंदर आ गए. Okay, we have a question. Different conditions ky के लिए ky के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? अलीजिया बेटा, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. ये ky क्या पूछना चाह रहे हो तुम? अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे. दानियल, दिस इज May June
2015 वेरिएंट इज 21. क्वेश्चन नंबर इज 3. ठीक है भाई. अब बच्चों बता रही है द फर्स्ट वैल्यू विल बी 1.8. द फर्स्ट वैल्यू विल बी 1.8. अब ब्रायरन कहे टोटल की पहली वैल्यू 0, रिजेक्ट की पहली वैल्यू 0, इनपुट वेट द वेट इज 1.8. इज वेट इज इक्वल टू -1. नो. मैं नीचे मूव कर गया, यू कैन सी मैं नीचे मूव कर गया. इज वेट ग्रेटर देन 2.5. नो. Total is equal to total plus weight. So the previous value of total was 0. 0 के अंदर मैंने ऐड किया बच्चों 1.8. The new value will be 1.8. So the new value of total is 1.8. Now you can see अब ये सिंबल ट्रेवल करता हुआ वापस ऊपर जा रहा है टूवर्ड्स इनपुट वेट. ठीक है. Now this time the weight will be 26. So let's start. This time the value of weight is 26. Is weight is equal to -1? No. Is weight greater than 25? Yes. So now this time the value of reject you can see. अब मुझे इस साइड पे yes वाली साइड पे ट्रेवल करना है. So the value of reject will be is equal to reject plus 1. So now the value of reject will be 1 and I need to travel this path over here. Now the input that value that we are going to input is 7. So the weight will be 7 this time. Is it weight is equal to -1? No. Is weight greater than -20 greater than 25? No. Total weight is equal to total weight plus weight. So this will become 8.8. 7 add किया मैंने तो this will become 8.8. And again I will be traveling to the top again and input weight again. This time the weight is 11.3. अब देखिए कितना सिंपल कोड है बच्चों. सिर्फ आप लोग को क्या करना होता है, जनरली यही सवाल आता है. जनरली हमारे पास फ्लो चार्ट में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दैट यू नीड टू ट्रेस द टेबल आउट. ठीक है. तो करना कुछ भी नहीं होता, आप लोग को बस ओवर एफिशिएंट नहीं बनना होता. यू जस्ट नीड टू ट्रेवल अलोंग. आपको बस इसी तरह क्या करना होता है, ट्रेवल करना होता है और just keep traveling along and आपका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल आता रहेगा. 11.3 अब कर लेते पूरा, मैं कर लेता हूँ ये वाला पूरा पार्ट करवा देता हूँ आप लोग को. 11.3 weight is equal to -1. no and total is equal to total plus 11.3. this will become, अब मैं इसके अंदर अगर 10 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 18.8. 18.8 में मैंने 1 ऐड किया 19.8. 19.8 के अंदर मैंने 3 ऐड किया, दिस विल बिकम 20.1. 20.1 बन गया हमारे पास. ठीक है. थैंक यू अब्दुल नाफे. मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बच्चों अगेन बता रहे ऊपर चले जाओ भाई, वापस हम यहां पर आ गए. दिस टाइम द वैल्यू इज 10. दैट्स इजी. The weight is 10 now. 30.1. This time the weight is 2.5. And this will become 32.6. This time the weight is 25.2. Since weight is greater than 25, so reject is equal to reject plus 1. तो reject value क्या हो जाएगी मेरे पास? It will become 2. Now this time the weight is 5. कितना weight होगा भाई? इतना
अच्छा, यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, पेपर 2 में भी कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, सो विदाउट कैलकुलेटर आप लोग को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। 5, so this will become 37.6. After this we are having weight 19.2, 19.8, so 19.8 का मतलब हो गया मेरे पास 47, 57, 56 और 0.8 है, तो 56, 57, 7.4। कहीं मैं मिस्टेक करूं मुझे पकड़ लेगा भाई, तो दिस विल बिकम 57.4 एंड नाउ 29.3, तो 29.3 का मतलब है रिजेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3, बिकॉज दिस वेट विल बी रिजेक्टेड एंड द लास्ट वेट इज -1। सो -1 जब आया बच्चों, अब देखें ये वाली कंडीशन मेरे पास यस हो गई, आउटपुट टोटल कॉमा रिजेक्ट, सो द वैल्यू ऑफ टोटल इज 57.3 कॉमा and the value of reject is 3. So this completes our question. I hope आप लोग को ये क्वेश्चन सवाल अच्छा लगा होगा। देखिए कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, we just need to travel along. सिर्फ आप लोग को सिंबल्स पता होने चाहिए कि this symbol is for the start, this symbol is for the processing, this symbol is for the input, this symbol is for decision making, and you just need to travel along to complete this trace table. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ कोई लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लो चार्ट का, ठीक है। 2020 के ऊपर मूव करते हैं जरा, और कोई लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ अ फ्लो चार्ट। ओके, लेट्स सी। दिस इज अक्टूबर नवंबर सॉरी मई जून 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जरा ये सवाल भी सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं अगेन इसको कॉपी करके वहीं ले जाता हूँ, ताकि पैरेलल में आप लोग के पास दोनों डायग्राम शुड बी अवेलेबल। ओके, क्वेश्चन रीड कर लें एक दफा। This flowchart input the points won and the points lost when playing a game. The difference between the points won and lost is calculated depending on the result. The player can move up to the next level, stay at the same level, or move down to the previous level. The flowchart finishes when user input -1. Fine, let's start. Let's kick off with this question. सबसे पहले बता रहे बच्चों 5000 points 1
and points lost is 4474. दोनों को एक साथ ही दिया हुआ होगा, I guess. Complete the trace table for the following set of inputs. ठीक हो गया. So points 1 5000, points loss 4474. The difference बच्चों will be, anyone कोई बच्चा मुझे the difference बता दे calculate करके, what will be the difference between them? 5500 ये हो जाएगा and 26 I guess 526. ठीक है, thank you Kasha. So 526 will be the difference. तीनों चीजें आ गई भाई, डिफरेंस आ गया हमारे पास. Is difference greater than 1000? No. Is difference greater than less than 0? No. Output, keep on trying. मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, खैर चलें, खैर अगले उसमें थोड़ा छोटा कर देंगे. Keep on trying. And बच्चों ये फ्लो करता हुआ कहाँ जा रहा है? वापस से it's moving towards the input stuff. Now this time the value of 6055 and 2000 are the points that we have lost. So the difference will be 5 and 4. 4000 and 55 will be the difference. Is difference greater than 1000? Yes. Well done. Move up. Move up. और again ये चार्ट बच्चों ऊपर चलेगा towards input points. Now the next values are 7900 and 9800. So I think the difference is of minus 1100. मुझे माइनस 1100 का डिफरेंस नजर आ रहा है. आप लोग जरा, मैं वो YouTube पे हिंदी टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो हो गया, जरा मुझे जरा डिफरेंस आप लोग बताएगा. What is the difference between both of them? 7900 minus 9800 minus 1900. I hope Abdul Nafi you did this without the help of calculator. अच्छा जी, less than 0 हो गया भाई. So is difference less than 0? Yes. Output, sorry, move down. And then you need to move up again. So output will be sorry, move down. Now 3000 and 2150. So the difference will be, I think 850 will be the difference. And so we need to output, keep on trying. And the last input बच्चों is -1 and 7 6700. You don't need to calculate the difference. आपको difference calculate करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहीं पे check करेंगे 0.1 is equal to -1, yes, तो आप यहीं पे end कर देंगे अपना code. So that's it. We are done. 3 marks. Let's see what examiner is saying over here. The flowchart needs to be changed.
When the difference is more than 5,000, the output message should be fantastic, leap up 2 levels. Describe the changes that will be needed that will need to be made to the flowchart. 3 marks. So let's see. So we just need to check. बच्चों हम यहाँ पे एक और चेक लगा देंगे. हम लोग पहले चेक कर लेंगे इज द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 5,000 and the difference is less than, sorry, if the difference is greater than 5,000 तो हम वो मैसेज पर्टिकुलर डिस्प्ले करवा देंगे. दैट्स इट, खत्म. ठीक है. सो बड़ा सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा. अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों कोई चीज आप लोग ड्रॉ नहीं करते, कोई सूडो कोड नहीं लिखते. ठीक है. तो आप सिंपली यहाँ पे बताएंगे आफ्टर calculating the difference, we will check for a condition that using decision box that if the difference is more than 5,000, then certain message will be displayed. In case the condition is false, we will move to the next condition. तो सिंपल सा बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया about the following conditions. So this was also one of the question that we have. अब ये ईयरली भी आप लोगों को करवाने, ईयरली करवाऊंगा मैं आप लोगों को as soon as possible. I think अगली क्लास के अंदर हम लोग वर्क करेंगे ऑन प्री रिलीज मटेरियल. उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सारे करवा दूंगा ताकि प्री रिलीज हम लोग वाइंड अप करके साइड में कर दें. एंड इन द रिमेनिंग क्लासेस फिर मैं आप लोग को ईयरली पास पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करूंगा पेपर 2 के, ताकि अब आप लोगों को थोड़ा सा ग्रिप आउट हो चीजों के ऊपर और आप लोग देखें कि पूरा एक पेपर किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है. ठीक है. I already sent the solution of pre-release material आपके ग्रुप पे मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ और काफी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन मैंने क्रिएट किया है प्री रिलीज का बच्चों फॉर यू पीपल. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जर्नली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट्स के. बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं देता एग्जामिनर फ्लो चार्ट्स के. ये भी एक ट्रेस टेबल है. ट्रेस टेबल वाले आप लोग खुद करेगा.
This is also one of the trace table that you need to perform. Okay, this is अक्टूबर नवंबर 2019। अब सवाल देखें बच्चों, अक्टूबर नवंबर 2019, क्वेश्चन नंबर 6, draw 4 different symbols of the flowchart, describe the purpose. So बच्चों वाला सवाल है, डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद बता दें मुझे। For starting and ending of the flowchart, then we have for decision making diamond symbol, for processing, and this is for input and output, 4 marks। ठीक है, सिंपल सवाल था बड़ा, अक्टूबर नवंबर 2019 में आया था ये हमारे पास। सारे जर्नली बच्चों देखें, आपके पास ट्रेस टेबल के ही क्वेश्चन आए हैं फ्लो चार्ट्स के। ड्रॉ करने के लिए एग्जामिनर इन जर्नल नहीं देता, देता है। आई हैव सीन फ्यू क्वेश्चन जहां पे आपको फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना था। ये भी एक सवाल आ गया हमारे पास, आसान है। मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल सवाल हो तो वो करवाऊं मैं आपको। ये मुश्किल लग रहा है भाई। 6 नंबर 7 नंबर का सवाल है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सवाल एक और कर लेते हैं जरा। अक्टूबर नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दिस। ऑलवेज रिमेंबर, जितना बड़ा सवाल होगा उतना इजी होगा। अच्छा जी, सो द इनपुट आर 6, 2.5 and 2. Input, height, depth and chlorine. So the inputs are 6, 2.5 and 2। ओके की इनिशियल वैल्यू क्या करवा दी, ट्रू करवा दी। लिख दें भाई ट्रू। इज डेप्थ ग्रेटर देन
height divide by 2, the value of depth is 2.5. हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास 3. 2.5 is greater than 3. No, नीचे आ गए हम लोग. Is depth less than 2.5 divide by 6 divided by 3, that will be 2. No, ये भी false है, नीचे आ गए. Is chlorine greater than 3? Chlorine 2 है. No. Is chlorine 2 है. Is less than 1? No. Is okay is equal to true? Yes. Output pool is okay to use. तीन तीन क्यों दिए मैं हम लोगों को भाई? अच्छा, वैल्यू अपडेट होगी चीजों की, सही है. 3 लाइनें क्यों दी हैं? लेकिन एक लाइन देते सिर्फ. Fair. Now this time input 4, 3 and 1.5. Again, we need to restart the cycle. The first value of OK is true. Okay, depth is 3 and height is divided by 2. 4 divided by 2, that will be 2. So 3 is greater than 2. Yes. Output water too deep. Okay. After this, अब देखिए साइकिल चेक करें बच्चों. ये साइकिल फ्लो कैसे कर रही है? यहां पे फ्लो करती हुई जा रही है. अब ओके की वैल्यू क्या करवा दी? फॉल्स. नोट कर ले. और फॉल्स के बाद अब ये कहां आ रही है? यहां पर आ रही है. ठीक है. क्लोरीन ग्रेटर देन 1.5? नो. क्लोरीन लेस देन 1? नो. ओके ट्रू? नो. अगर ओके ट्रू नहीं है तो हम लोग बस यहां से आगे क्या करेंगे? एंड कर देंगे. सो वी आर डन. देयर इज नथिंग टू बी आउटपुट. सिर्फ ये वाटर टू डीप, बस हमें ये आउटपुट करना था. नाउ द लास्ट वैल्यूज बच्चों आर 6, 3.5 and 4. And the first value of OK is 3.5 is greater than 3. So that's true. Output water too deep. OK की वैल्यू हो गई false. Is chlorine greater than 3? Yes. Output too much chlorine. Add more water. After this, add more water के बाद I need to travel along. मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप करूंगा. And we are done बच्चों. 6 marks. अब देखिए कितना आसान सवाल था. And examiner awarded us 6 marks for this part. Identify the problem with the algorithm that the flow chart. Identify a problem with the algorithm that the flow chart represents. Which problem he's talking about? Output error. Check the level of chlorine, depth of the water compared to the height of the swimming pool. Error messages are output if the problem is found.
आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, देखिए जरा एमएस में। अच्छा, ये वैसे बात कर रहा है कि we cannot add more, कोई ऑप्शन नहीं given कि we can add more water, or there is no validation that is can be applied on height when you are entering adding the chlorine. Tells you to add chlorine when there is no water, runs only once, सिर्फ एक ही दफा ये आपके पास रन हो रहा है बच्चों। तो परफेक्ट, बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास इन जनरल फ्लो चार्ट्स के आते हैं, ठीक है। सो आज हमारी पहली क्लास थी इन रमजान। सो हम लोग बस अब इसको यहीं तक होल्ड करेंगे फ्लो चार्ट से क्वेश्चंस को। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं व्हाइल सॉल्विंग, सो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, और मैं अगली क्लास के स्टार्टिंग में पहले आप लोग को वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड मोर ओवर अगली क्लास के अंदर शायद मैं थोड़ा सा नेक्स्ट संडे तक होल्ड ना करूं, मैं पहले ही क्लास कर लूंगा। आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू पीपल, मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सो इन दैट पर्टिकुलर क्लास मैं आप लोग को बच्चों प्री रिलीज के क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक दफा पहले पूरा प्री रिलीज एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम टास्क 1 टू टास्क 3, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल द टास्क देन मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा ऑफ प्री रिलीज मटेरियल। और फिर हम लोग कुछ थोड़ा छोटा मोटा पाइथन का कोड भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर आप लोग को यू शुड फील कंफर्टेबल तो आप लोग पाइथन के अंदर भी अपने कोड को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। सर आपने सूडो कोड करवा दिया? यस अलीजिया, मैंने एक दफा आप लोगों के पास फाइल शेयर करी है, लेकिन अब मैं उसको एक्सप्लेन जो है वो अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। चलें, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।